So next we are going to start profit and loss account. Trading account we have done in the last video, and in which we have taken 1 to 2 examples. We have done direct expenses related things also. So as I said, trading and profit and loss account, which rule we are going to apply? Expense and losses debit and incomes and gain credit. So very important thing, trading account, when we have prepared trading account, you have seen direct expenses we have already inserted in the trading account. ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट आ चुके हैं, तो P&L अकाउंट बनाने के लिए व्हाट वी नीड नाउ, यू डोंट हैव टू मेमोराइज मेनी थिंग्स कि ये इनडायरेक्ट है या नहीं है. सिंपल है, जो एक्सपेंस आप ट्रेडिंग में डाल चुके हो दोज आर डायरेक्ट एक्सपेंस. उसके अलावा अगर आपको कोई इनकम गेन या एक्सपेंस और लॉसेस नजर आते हैं, दोज आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ P&L अकाउंट, और कहीं नहीं जाएंगे. वो सारे एक्सपेंस सारी इनकम्स आपको P&L में दिखानी होती है. डिफरेंस सिर्फ इतना है, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट और बाकी जितने भी एक्सपेंस एंड इनकम्स बचेंगे वो P&L में आ जाएंगे. तो इन शॉर्ट जितने भी अगर आप सारे इनकम्स को विदाउट एनी फॉर्मेट एक साइड पे प्लस करके सारे एक्सपेंस माइनस कर लेंगे ना, नेट प्रॉफिट आपका तब भी सही आ जाएगा. मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपसे सिर्फ नेट प्रॉफिट पूछा गया है ना, तो आप सीधा इनकम्स और इनको माइनस कर दे एक्सपेंस एंड लॉसेस को, यू विल गेट नेट प्रॉफिट एंड दैट टाइम आल्सो. बट देयर इज अ फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट. अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट पूछा गया है एंड प्रॉपर फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा. एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स आर आल्सो आस्क्ड एंड दे यू कैन कैलकुलेट इन अ फ्लो ओनली. नेट प्रॉफिट आपका सही हो सकता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी रॉन्ग इफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने गलत रखे हुए हैं तो. So how to go with it? What we have done, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ग्रॉस लॉस आता था. ठीक है जी. सो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो आपका, एज आई सेड, प्रॉफिट एंड गेन आर गोइंग टू बी ऑन द क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंस एंड लॉस ऑन द डेबिट साइड. लॉस होगा, अगर आपका ग्रॉस लॉस आया होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो डेबिट साइड में चला जाएगा, ब्रॉट फॉरवर्ड. वहां से आप उठा के यहाँ पे लिख देंगे. एंड इफ इट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके अलावा एज आई सेड, जितने भी रेवेन्यूज एंड गेन्स और एक्सपेंसेस बचे हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू पुट इन P&L अकाउंट. अब वो कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर इसको डिटेल में देखा जाए, सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अदर काइंड ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. एंड अदर देन ऑल दीज थ्री, ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंशियल के अलावा कोई भी और एक्सपेंस या लॉस है, दैट आल्सो यू आर गोइंग टू पुट हियर ऑन द डेबिट साइड. एंड सिमिलरली, एनी रेवेन्यू एंड गेन given in the sum, given in the statement, you are going to put on the credit side of P&L account. Similarly, बैलेंसिंग करेंगे, प्रॉफिट आपका रेवेन्यू साइड ज्यादा है तो आपका डेबिट साइड पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा. एंड इफ इट इज एक्सपेंसेस और लॉसेस ज्यादा है, देन इट इज गोइंग टू बी नेट लॉस. Net profit and net loss. At the end, what we are going to get from profit and loss account, net profit और net loss. टैक्स होगा तो वो भी हम यहीं पे आपका डेबिट साइड पे डाल देंगे. Here it is mentioned transfer to capital account. अब ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है, इसका आगे क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को तो हमने ट्रांसफर कर लिया P&L अकाउंट में, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद योर दिस नेट प्रॉफिट, ये लास्ट स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स अभी के लिए, दैट इज बैलेंस शीट. तो नेट प्रॉफिट जो है ना, वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा. If it is net profit, net loss होगा तो माइनस हो जाएगा. That's why it is mentioned over here. What we are going to do, transfer to capital account. कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाया था, जैसे हमने लेजर में सीखा था, उसमें आप तो डायरेक्टली डाल दीजिए, देन आल्सो इट इज फाइन. और द अदर वे अराउंड इज, बैलेंस शीट में कैपिटल जब लिखेंगे वहीं पे ऐड माइनस कर दीजिएगा. So we'll take one example for the same, or simple example to calculate it. Here you can see where we have to prepare proper trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2021. So this is the case. आपको सब information दिया है जिसमें direct and indirect expenses both are there. And this is trial balance, debit balance and credit balance. And here you can say closing stock is also given, that is 7,500. So we can just go with it. I'll just put all the items. If you can see, here is the sum. So I'm going to write it down. Opening stock सबसे पहले आपका आ जाएगा, opening stock. So opening stock is given 2,500, simple.
then there will be 2 purchases. We can see अगर purchase return है, purchase return नहीं है, so 10,000 exactly we are going to put. Wages is going to be your direct expense only, तो 2,000 का wages आ गया. Salary indirect है. Carriage inward is given. Carriage inwards is going to be again your direct expense, which is going to be 1,000. Carriage outward, interest allowed and rent, these all are your indirect expense, तो ये नहीं आएंगे यहाँ पे लिख देते हैं buy sales. Buy sales is of 20,000, and other than that, only on the left hand side, sorry, on the right hand side, 2 items we add. We put sales and closing stock. Closing stock is 7,500. So what now need to be done? Totaling, and total is your 27,500 both the sides, and we can see it is clearly mentioned कि आपका debit side, credit side is more, so ये आपका gross profit आने वाला है. So if we can calculate it, 27,500 में से minus कर देंगे, this is going to be your 12,000. So 12,000 का profit we get. Done. So how to go with trading account तो हमें आता था. Now we'll see how to go with profit and loss. अब ये gross profit जो है हम इसको forward कर देंगे here on the credit side of P&L account. Gross profit, we gains और profits हमारे credit side पे आते हैं. 12,000 का profit आ गया. बाकी के जो बचे हुए हमारे items हैं, first is salaries, then there is carriage outward, then there is interest allowed. Interest allowed means you paid. अगर interest received होता तो income होता, we put on the credit hand side, but ये interest allowed है तो मतलब आपने दिया है, तो ये इधर आ गया. Then rent, rent पे भी कुछ नहीं लिखा कि factory rent है, कौन सा rent है, so ये भी इधर आ जाएगा. 5,000 का salary है, carriage outward is 2,000, interest allowed 500, and rent is of 1,500. So 5, 6, 7, 8, 9, 9,000 का आपका expense side और 12,000 का profit. अच्छा, okay. There are some items gain related भी हैं. Interest received है. Interest received आपका आ गया income. Similarly, commission received जो है, that is also your income of 600. So this is going to be on the credit hand side. तो आपका अब end में क्या आएगा? Net profit. जो हमने calculate करना था, but before that we'll just add both the sides. So this should be 13,000 and the balance on the debit hand side, and it is going to be 4,000. So this is how to go with the trading and profit and loss account, and I have taken very simple sum to just let you know what is the structure, how to go with it. Gross profit जो आया, हमने P&L account start ही gross profit या gross loss से होगा. Either it is your vertical format or T format. Profit and loss needs to start from your gross profit or gross loss if there, and probably it is going to be there. So this is done. I'll take one more sum जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा statements हो. You can see on screen there is another sum where we have to prepare a trading and profit and loss account of 2016 31st March. So we'll go with it. Trading account पहले बना लेते हैं. I'll just यहीं से मैं copy paste कर लेती हूँ so that ज़्यादा ना लिखना पड़े. So opening stock, I'm just going to correct the values over here. 35,000 का opening stock है. Sales जो है, sales are of 2,50,000. There are sales return as well. Similarly, purchases 75,000. Wages 25,000. Carriage inward is 1,500. And gross profit अभी नहीं आएगा according to me, because there are